किस तरीके से एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल होता है, बट सक्सेस तो बाद में आती है। Any entrepreneur that you speak to, who has been successful, and वो हमेशा ये बोलते हैं कि बॉस पहले 5 साल तो अब भूल जाओ कि कुछ होने नहीं वाला है आपका। क्या आपके पास में पैसे हैं तभी आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेडी हैं, या मेरे पास एक पैशन है एंड आई नो दैट आई कैन डू इट, इज दैट नॉट सफिशिएंट? एक बहुत बड़ी गलती होती है कि लोग सोचते हैं कि पैशन यू थिंक दैट देयर इज अ लक। मैंने बिल गेट्स को बोलते हुए सुना है 60% कंपोनेंट कोई ना कोई तो सक्सीड करेगा। 100%। ठीक है, क्या है वो माइंडसेट और क्या है वो टेक्निक्स? ऐसे दिन आएंगे कि मतलब आप खुद अपने आप को क्वेश्चन करोगे मैं क्या कर रहा हूँ। A lot of people say, and rather I have heard you also many a times saying that burn the boats. You will always rely on plan B, C, D or maybe X, Y, Z. लाइक यू हैव टू बी करना है तो करना है, नहीं तो मरना है। आज की डेट में अगर आपको अमीर बनना है ना, तो it is very very easy to become very rich. आजकल हमें क्या बताया जा रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कि स्टॉक ट्रेडिंग करो, नोट छापोगे। कोचेस जो हैं एंड जो स्टॉक रिलेटेड पॉडकास्ट जो हैं, दे प्रॉब्ली लाइक द मोस्ट वॉच्ड। अगर हमको सक्सेसफुल होना है, बिजनेस बनाना है, बड़ी चीज करनी है, तो क्या क्या चीजें हैं जो एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखनी चाहिए? पीस एडवाइस है कि बहुत पर्सनल रिलेशनशिप एंड योर हेल्थ, बिकॉज मनी इज लॉस्ट, nothing is lost, right? But if your health is lost, everything is lost. there is a 24-25 years of a guy who wants to start his entrepreneurial journey. Now what he should do? A lot of children come to me and be like, this is my idea and this is what I want to do, I'm not sure. Again, I would say Last message, Gaurav. so last message, Gaurav, welcome to Vilasin Vibes. थैंक यू पवन, आपने बुलाया एंड आई रियली लव योर कंटेंट। जैसे आपने बताया कि विलासन की जो इंस्पिरेशन थी कृष्ण भगवान से एंड द मैसेज दैट यू ब्रिंग टू द पीपल, सो थैंक यू एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। गौरव, आप एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, आप लीडिंग सेल्स कोच हैं, आप कंसोर्टियम गिफ्ट नाम की एक कंपनी को रन कर रहे हैं, और आपके आई थिंक ब्लू चिप, ऑलमोस्ट एवरी ब्लू चिप कंपनी इज योर क्लाइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? एक प्रोसेस रहा है, शुरू में नहीं थे बट काफ़ी साल हो चुके हैं। सो इट इज़ कंसोर्टियम हैज़ बीन इन बिजनेस 25 साल हो चुके हैं। तो विद टाइम आई थिंक काफ़ी हमने एफर्ट्स भी किए और कुछ लोगों ने हमें ढूंढा एंड यस, सो आई थिंक आज मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप गुड़गांव के अंदर किसी भी बिल्डिंग के अंदर चले जाएँ तो उसके अंदर हमारा 1 या 2 क्लाइंट्स तो होंगे। राइट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गौरव आपके साथ में किस तरीके से एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल होता है, बट सक्सेस तो बाद में आती है। लॉट ऑफ टाइम यू नो इट दैट यू योरसेल्फ हैव फेल्ड मेनी अ टाइम्स, एंड बहुत सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स दे फेल मल्टीपल टाइम्स, और उसके बाद में कहीं जाकर के एक सक्सेस मिलती है। दैट आज हमारे पास में गिनी चुनी, अगर हम गिनते हैं अपने उंगलियों पे कि यूनिकॉर्न्स कितने बन गए हिंदुस्तान के अंदर, बहुत अच्छा लगता है और सब उनको देख करके एक इंस्पायर होते हैं। बट देयर आर सो मेनी कंपनीज, सो मेनी पीपल हु आर फेलिंग डे इन एंड डे आउट। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि एक इंसान एक्चुअली के अंदर जब वो फेल हो जाता है तो उसके बाद में वो जो माइंडसेट है कि नहीं मुझे फिर से आना है, करेक्ट, वो क्या होता है और क्या होना चाहिए? तो वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसे आपने बताया, फेलियर की जो जर्नी है काफ़ियों के लिए स्टार्ट हो सकती है इवन फ्रॉम वे बैक इन स्कूल। जब मैं इनिशियली स्कूल के अंदर था तो काफ़ी हाई परफॉर्मर था। अगर मैं क्लास के अंदर टॉप 5 में नहीं आता था तो पेरेंट्स बोलते थे यार क्या हो गया तुझे इस टाइम। और एक टाइम आया 11th के अंदर, जब मैं 1-2 स्कूल्स बदल के वापस दिल्ली आया था, तो 11th के अंदर मेरी मैथ्स के अंदर कंपार्टमेंट आई थी। ओके, एंड दैट मेंट दैट अगर मैं रीटेस्ट पास नहीं होता तो एक्चुअली आई हैव बीन 11th फेल। बट इवन दैट टाइम आई रियलाइज दैट इट्स ओके टू फेल, बट व्हाट लेसन्स आई कैन लर्न फ्रॉम दैट फेलियर। तो वो लेसन वहाँ से सीख क्या है हमारी। एंड जब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आए पहली बार, सब जानते हैं कि मैंने WWF ट्रम्प कार्ड्स बनाए एंड दैट वाज ग्रेट सक्सेस एट द एज ऑफ 16। स्टॉक मार्केट गेम जब मैंने पहली बार बनाई तो 1000 पीस मैंने बनाए थे, वो भी मैं बेच नहीं पाया, राइट, इवन दो मैं हर टॉय शॉप के अंदर जाता था, ट्राई टू सेल दम, सो दैट वाज अ फेलियर प्रोजेक्ट। बट जब लियो टॉयज़ ने वही स्टॉक मार्केट गेम मेरे से खरीदी, उन्हें 50,000 पीस बेचे, राइट। उसके बाद मैं 2-3 और बोर्ड गेम्स बनाई। वो बोर्ड गेम्स इतनी फेल हुई दैट I should have actually given up on entrepreneurship at that stage only. But ठीक है, लगे रहते हैं। I think it's always about हमारी learnings क्या थी from that particular failure, how you will fail, and once you fail, how do you actually bounce back, and how do you try not to repeat those messages and those mistakes. Like I know एक time अपना consortium के अंदर we made incorrect purchase from China, और 2 कंटेनर आने थे। It was my first big deal I was doing from China, and I said that यार 2 कंटेनर मंगा लो, माल तो हम बेच ही देंगे। एंड व्हाट हैपेंड इज दैट एक तो कस्टम क्लियरेंस में बहुत टाइम लग गया, एंड दिवाली के लिए जिसके लिए हम लेके आए थे, गिफ्टिंग कंपनी थी हमारी, दिवाली तो छोड़ो क्रिसमस भी निकल गई, एंड आई थिंक जनवरी के अंदर क्लियरेंस हुई। तो एक तो डैमेज भी लगी,
जो सीजन था गणेश जी की मूर्ति क्या नहीं थे उसके अंदर, लाइक ऐसे मैनी ईयर्स अगो, मे 15-16 ईयर्स अगो, एंड लगा था कि अब तो भाई अंदर घुस गए हम. सो इवन दैट वाज अ लेसन दैट कि चाइना से क्या मंगवाना चाहिए, क्या नहीं मंगवाना चाहिए, एंड सो देयर ऑलवेज बी लेसन्स. एंड आई थिंक द बिगेस्ट लेसन दैट parents need to tell children is that it's okay to fail. Okay, it's okay to tell an entrepreneur that it's okay to fail, but जब आप वो mistake आपने की है, it's important that you don't repeat it too often, because if you don't learn from your failures, दिक्कत तब आती है. बहुत सारे लोग आज की डेट में, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ना चलन में है, बहुत कूल लगता है लोगों को, लगता है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं है देन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास में पैसा होगा, बहुत जल्दी आप अमीर हो जाएंगे, बहुत जल्दी शोहरत मिल जाएगी. व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया, लाइक आपके दिमाग में क्या होता है जब एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एकदम तैयार होता है कि नहीं मैं अब लाइक आई एम सेट फॉर दिस जर्नी? तो एक जैसे आपने सही बताया कि आज बहुत फैशनेबल हो गया है, राइट? पीपल ऑन इंस्टाग्राम, पीपल ऑन यूट्यूब, लाइक भाई नौकरी छोड़ो, 9 to 5 में कुछ नहीं बचा, जाके अपना बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योरशिप करो. द फनी पार्ट इज एनी एंटरप्रेन्योर दैट यू स्पीक टू, हु हैज बीन सक्सेसफुल, एंड ऑफ कोर्स आई स्पोकन टू मेनी इन माय टाइम एज वेल, वो हमेशा ये बोलते हैं कि बॉस पहले 5 साल तो आप भूल जाओ कि कुछ होने भी वाला है आपका. ओके, सो एक कैन यू टेक 5 years ऑफ no success, 5 years of cash flow not being positive, मतलब beg borrow steal, कैसे आपने कंपनी चलानी है आपको ही पता चलता है. तो आई थिंक दैट इट्स फनी जब लोग बोलते हैं कि आप मेरा कोर्स करो और मेरा कोर्स करके आप आपकी सक्सेस रेट 95% गारंटीड है. बॉस कहाँ से यार? Because statistics have proven, and there are books like E-Myth, the E-Myth visited, E-Myth revisited, etc. And many studies over the years, and वो बोलते हैं कि जो failure rate है, 80% of people who get into business or entrepreneurship and even the startup space, 80% will fail in the first 5 years, right? जो 20% रह जाता है उसका भी 80% और है, वो अगले 3 या 4 साल तक अपने खर्चे नहीं निकाल पाएंगे, which they would have actually got and done in a job, right? And still everyone thinks so fashionable, अरे यार कर लो. So what is very very important, one is obviously runway, you have to have that financial wherewithal कि चलो अगर नहीं भी चला 2-3 साल तो ठीक है, पैसा बहुत है, काम मेरा चल जाएगा. Second obviously risk appetite, like this risk है तो इश्क है. Risk appetite is very very important. And third is जो आप प्रोडक्ट सर्विस जिस लाइन के अंदर आप घुसना चाह रहे हैं, is it because is it a passion project or is it actually going to do something to help your end customer? Because अगर कस्टमर को बेनिफिट नहीं मिल रहा, सो व्हाई वुड दे बाय फ्रॉम यू? आपके जो यार दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, मे बी एक बार ही आपसे कुछ खरीद लेंगे, एक बार ही आपको कुछ हेल्प कर देंगे, बट आफ्टर दैट मतलब डज द मार्केट हैव अ डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस? आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन टुडेज इवॉल्विंग टाइम, जब AI का ज़माना है, डिसरप्शन है, everything has gone so quickly and is moving so quickly now that what happens if it's a great idea today but tomorrow it's dead? What happens then? So many factors come into play. सो यू सेड कि आपके पास में फाइनेंशियल रनवे होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं आपने क्रिएट किया हुआ है सो यू शुड नॉट गेट इनटू ऑन दिस जर्नी. सो मुझे लगता है कि क्या आपके पास में पैसे हैं तभी आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेडी हैं, या मेरे पास में पैशन है एंड आई नो दैट आई कैन डू इट, इज दैट नॉट सफिशिएंट? आई थिंक एक बहुत बड़ी गलती होती है कि लोग सोचते हैं कि पैशन इज इनफ. ओके, पैशन इज नॉट इनफ. आई हैव सेड दिस अ फ्यू टाइम्स बिफोर आल्सो. यू कुड बी अ ग्रेट कुक, लोग बोलते हैं तेरा खाना बड़ा अच्छा है, तू बेकिंग बड़ा अच्छा करता है या करती है, रेस्टोरेंट खोल ले या बेकरी खोल ले, या अपना ओपन like a cloud kitchen or something. Thing is, just because you're good in doing something doesn't necessarily mean it's going to become a great business. Many things come into play. आज सुबह ही मैं किसी के साथ बैठा था and she said IIT के अंदर some of the most brilliant minds are there. Technology is like in their blood. But she goes, when it comes to running businesses, she says, इतने बुरे हाल हैं सबके. And she's now a mentor for people who are in IIT, which is amazing concepts, but धंधे के बारे में कुछ नहीं पता उनको. Passion है, जुनून है, पागलपन है, वो सब कुछ है, लेकिन business चलाने के बारे में कुछ नहीं जानते. So maybe what happens in that case, and which is why companies sometimes bring a co-founder or many co-founders, क्योंकि ठीक है किसी का एक product है, एक passion है, they know that co-founder है, हो सकता है को-फाउंडर पैसा लेके आता है, हो सकता है को-फाउंडर मेंटरशिप लेके आता है, हो सकता है को-फाउंडर बिजनेस चलाने के स्टाइल्स लेके आता है. सो दोज आर, दैट्स व्हाई हाउ अ टीम कम्स टुगेदर एंड यू हैव 3-4 people who come together to form an organization. So I'd say it's important because, and again coming from experience, I've had times जब समझ नहीं आता था कि अपने खर्चे तो भूल ही जाओ, बट जो 2-3 एम्प्लॉय होते थे उनकी खर्चे कैसे निकलेंगे. I know I had a second hand Zen. That was the first car I bought.
मुझे ये नहीं समझ आता था कि उसकी किस्त कैसे मैं दूंगा, right? And this is again, 1995, 96, when I was like still, just in college, figuring out my stuff, and I said I want a car. My father said go on it and buy your own car. Yeah. तो पर उस टाइम भी जब कैश फ्लो इश्यूज होते तो ये समझ नहीं आता था कि उसकी EMI कैसे पे करेंगे. So those things hurt, right? And अगर आपके माइंड में यही चल रहा है कि यार पैसे कहाँ से आएंगे to just survive, how can you then be out there changing the world and changing your industry? So that's an important aspect. So that money will give you peace of mind. So do you believe that जो बिजनेस है या entrepreneurship है या वो जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वो ब्लड में होती है? जैसे मैं आपके केस में बोलूंगा कि यू स्टार्टेड वेरी अर्ली, राइट? When you were maybe I think 6 or 7, I think that is when you started your first venture or whatever literally you could do in your school, right? So क्या ये आपके ब्लड में होता है या ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक इंसान सीख भी सकता है कि धंधा करे कैसे? I think it's a combination of both. अगर मैं अपने केस में बात करूँ, so I came from a family of entrepreneurs. Like my grandfather worked somewhere in Pakistan before he moved to Gujarat, and he set up a unit which is a ceramic unit in Calcutta, outside Calcutta, which actually went bankrupt because जब अपना ज्योति बासु की movement start हुई थी, then the Marxist movement and all that, the same people went and they burned down the factory and they walked away with nothing. My father had always been an entrepreneur, right? And so I think they were okay with it. I know my first visiting card मैंने 12-13 साल का होगा, मैंने अपना द भगत एम्पायर करके एक विजिटिंग कार्ड भी छापा. लोग बोलते हैं भाई तू करता क्या है, उसकी टेंशन मत ले, कभी ना कभी तो कुछ करेंगे. So it was always there, and the good part is that my parents encouraged me. Right, just 3 days ago I was talking to a friend, he's now in the US, and he's like, भाई तेरे मदर फादर ने जब तू 16-17 साल का था एक बार भी नहीं बोला कि धंधा मत कर, राइट? जब हमने अपने मदर फादर को बोला कि धंधा करना है, वो 2-4 थप्पड़ मारे, राइट? बिकॉज दिस इज 1992. So मैं वही बोलना चाहता हूँ दैट अगर एक होता है आपके खुद के अंदर वो कीड़ा है कि नहीं मेरे अंदर है और मैं कर लूंगा और मैं करता आ रहा हूँ. सेकंड इज आल्सो द सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली की बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक आपकी फैमिली ने आपको इमेंस सपोर्ट दिया जब यू वर जस्ट ओनली 16-17 और यहाँ पर लोग 25-30 साल के हो जाते हैं when they go to their parents say that okay मैंने इतना जॉब कर लिया, मेरे पास enough money, I have like enough for the runway also, मुझे करना है, मुझे बिजनेस करना है. नहीं पर नहीं कोई. ये जो दोस्त की बात कर रहा था, मतलब even they came from a family of entrepreneurs, right? So even his father was very successful entrepreneur, और जब इसने बोला कि मुझे भी करना है, उन्होंने बोला पढ़ाई में ध्यान दे, ये सब टाइम नहीं है. एंड इवन लेटर ऑन व्हेन ही सेड नहीं अभी एक्सपीरियंस के लिए कहीं नौकरी कर ले. सो द पॉइंट इज इट्स यू राइट, इट्स आल्सो अबाउट द माइंडसेट ऑफ द फैमिली एंड हाउ कन्विंस्ड दे आर. लाइक आई नो व्हेन माय फैमिली वाज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, 19 साल का था, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. Baba came home one day and he said that we're finished because he'd been defrauded by one of his own family members and everything was gone. And my question was, okay, he had very influential friends. I mean, there was the Shrirams, the Bharatrams, and all these guys. And I said, should I go to and we call him Chiku uncle, who was Siddharth Shriram, amazing guy, owned Usha Shriram. I said, should I go to Chiku uncle and ask for a job? And he's like, कुछ लोग हैं जो नौकरी करते हैं और कुछ लोग हैं जो नौकरी create करते हैं. He said, you're the latter, you'll figure it out. So he could have called Siddharth Shriram, he could have called him and said that Gaurav आ रहे हैं उसको कहीं लगा ले. But he said no. He said you will figure it out. So I mean credit has to go to my dad and even my mother. And I know so many times like I thought मैं खत्म हो चुका हूँ, like कुछ नहीं बचा. And my mom would give me books and she herself wasn't very well at that time. She had a autoimmune disease and she was not doing the best. But she would go to a bookshop and she would buy a book and give it to me and she goes पढ़ ले. So all of these things happen. उस time ना तो YouTube था, ना Instagram था, ना coaching, ना mentorship, कुछ none of these things were there. But I think parents and even relatives played a very important role. I know I had one uncle and he was very successful, and he I went to him one day and I was starting out my first company and he said taxi चोरी बिल्कुल नहीं करनी. Right? That was his thing. इसका क्या मतलब है? He said taxi चोरी नहीं करनी. He says मतलब जितना genuinely you make, just declare it to the government. Right? Like even today people say हाँ टैक्सी चोरी, like GST की चोरी नहीं करनी. उस टाइम जैसे सेल्स टैक्स होता था या इनकम टैक्स की चोरी नहीं करनी. He said maintain proper books. कुछ 19-20 वहाँ नहीं करना. मैं 18-19 साल का उस टाइम, मतलब ऐसे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, because there were some accountants in the back in the day, and उस टाइम जो tax rates in India में they were very high, both income tax as well as your corporate tax. So everyone say नहीं profit कम दिखाओ, right? And so my mindset totally became that never ever have to like cheat in your books. So lessons like that were very very important. So a lot of it came from family as well. So आप में तो कीड़ा था
सपोर्ट भी मिल गया, बट देयर आर सो मेनी पीपल दोज हु वांट टू डू बिजनेस, उनको बनना है एंटरप्रेन्योर, वो फैशनेबल है तो वो फैशन उनको करना है। Right. और मे बी मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि सबके साथ फेल हो जाए, कोई ना कोई तो सक्सीड करेगा। 100%. ठीक है, तो क्या है वो माइंडसेट और क्या है वो टेक्निक्स, क्योंकि दोनों ही चीजें आई थिंक आर लाइक Yeah. इक्वली रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सक्सीड इन बिजनेस। Yeah. So I would say mindset के अंदर it has to be that like never give in, I will do whatever it takes. मतलब ये जो चीज़ें ये बहुत मायने रखती हैं, because ऐसे दिन आएंगे कि मतलब आप खुद अपने आप को क्वेश्चन करोगे। बाहर के लोग तो भूल जाओ, आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इससे बेटर तो मैं जॉब पे वापस चले जाता। So there will be those days also that will come in your mind, but then you always have to go back to, and I say this a lot, and Simon Sinek ने वो किताब लिखी थी Start With Why, where he said, what is your purpose? What is your reason for coming in? Or people confuse passion with purpose. Okay, purpose is that, okay, I'm doing this because I want to change, lives, because I want to change the industry, because I want to go out there and do something, which will make me remembered. Okay, now today I'm older, soon I'll be, hitting, almost 50 years old. So what has become very important for me is a legacy question, right? What will I be remembered for? ठीक है, पैसे बनाए, employment अपना create किए and all of that, but what is your legacy going to be? So I think why, purpose, legacy in due course, okay, these will become bigger questions. But come back to people who are just starting out, I think again, know your why. Like why are you doing this, right? And Simon Sinek, I mean, it's a beautiful TED talk. We were talking about Right. TED earlier, where he talks about the golden circle, Yes. and it's about what do you do, how do you do it, why do you do it, right? So when you have those these things, you always start from the why. Right? When you ask someone, मेरे एक दोस्त है, मतलब he owns this company called Ubon, and he was on one of my podcasts, and he said जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, मैं उनको पहले ये पूछता हूँ, I don't ask them what you do, I ask them why do you do what you do, right? And that's a very powerful question. तो अगर आप भी किसी entrepreneurship या जिस चीज़ के अंदर आप घुसना चाहते हैं, podcast start करना चाहते हैं, why do you want to do it? Right? Why do you want to get into podcasting? ये because सब लोग कर रहे हैं today, podcasting is very fashionable, or because like you said, you want to take the knowledge and the insights of people and you want to bring it to your audience. So you want to change lives, you want to inspire people. So that is your why. So एक दिन अगर आपने episode release किया, आपको हजारों लाखों view नहीं मिले, ठीक है, मतलब it is still I'm doing it because this is my greater purpose. वो aspect अपना important रहता है। आप सेल्स कोच हैं, वन ऑफ द रादर लीडिंग सेल्स कोच इन इंडिया। सो ये जो सेल्स कोच बनने का आपको इंस्पिरेशन मिला, आपके ऑलरेडी कंपनी थी, Correct. व्हाई डिड यू स्टार्टेड दिस? वेरी इंटरेस्टिंग। सो इनफैक्ट 2017 के अर्ली पार्ट में मैंने वो किताब पढ़ी होगी, स्टार्ट विद व्हाई, साइमन सिनेक। अब मुझे अभी याद है, मैं दिल्ली से बागडोगरा जा रहा था, वाज ऑन अ प्लेन, आई रेड द बुक, blown away. मतलब my in-laws stay in Bagdogra, and while I was with them, I kept reading that book, and I said there has to be something bigger. ठीक है, गिफ्टिंग कंपनी अच्छी चल रही थी, कंसोर्टियम का नाम था, बट सब लोग बोलते थे भाई तेरे अंदर कुछ है, तो कुछ ज़्यादा कर सकता है। तो this conversation was always there. I read Start With Why. Then I was in a BNI meeting, and I've been a BNI member for many years, and उसके अंदर एक ad था, मैंने बुक फ्लिप की, उसमें लिखा टोनी रॉबिन्स इज कमिंग टू एशिया। अब टोनी रॉबिन्स नॉट अ फैन, बट ऐसे चल ठीक है, टोनी रॉबिन्स आ रहा है सिंगापुर के अंदर, माय ब्रदर इन लॉ वाज देयर, ऐसे फ्लाइट का ही खर्चा है ना, इवेंट का खर्चा है, देख लेते हैं। तो टोनी रॉबिन्स का जो अनलीशिंग द पावर विद इन जो इवेंट है, ऑन day 3 ही डज दिस थिंग अबाउट लिमिटिंग बिलीव्स, लाइक व्हाट इज योर लिमिटिंग बिलीफ, एंड दैट टाइम माय लिमिटिंग बिलीफ केम टू माय माइंड दैट कंसोर्टियम मैंने स्टार्ट किया है, मुझे ही सब कुछ करना है, मैंने सब कुछ कंट्रोल करना है, एंड ही सेड फ्लिप इट, ही सेड सी हाउ यू कैन रिवर्स दैट माइंडसेट, दैट यू कैन एक्चुअली लेट गो, डेलीगेट, बिल्ड अ टीम, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आई सेड ओके ग्रेट। उसी टाइम मैंने साइन किया ग्रांट कार्डोन के साथ टू हेल्प कंसोर्टियम गिव्स, राइट, एंड दैट टाइम आई थिंक कंसोर्टियम वाज डूइंग अबाउट 2.5 million US, एंड जुलाई के अंदर हमने ग्रांट कार्डोन के साथ साइन किया, हिज टीम, माइक बॉनेट, ऑल ऑफ दीज गाइज वर एक्चुअली हेल्पिंग अस। By December, we had doubled our turnover. I'm like, this is crazy, yaar. ऐसे मतलब, whatever we invested with Grant Cardone, मतलब, the return is so good. And by virtue of that, it also meant that I could attend a Grant Cardone event in Las Vegas. So, February, I think 12th या 13th of 2018, I'm in Las Vegas. और जो माइक बॉनेट मेरा अकाउंट मैनेजर था, ऐसे मुझे ग्रांट कार्डोन से मिल रहा है। बोला भाई पागल हो गए, तेरी फ्री की सीट है, इस कमरे के अंदर 10,000 लोग हैं, तेरी सीट मतलब बिल्कुल पीछे है स्टेडियम के अंदर, ग्रांट कार्डोन उनसे मिलता है जो $20,000 देके आगे वाली सीट पे बैठते हैं। ऐसे भाई मैंने तो मिल रहा है, इसे चांस ही नहीं हो पाएगा। ऐसे मैं तो उसके लिए इंडिया से गिफ्ट भी लेके आया था, इफ यू सी ग्रांट कार्डोन, माई इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो कार्डोन्स, he's got that in his house, so it's a crystal cube I made with Cardone saying thank you for the 10x life. ऐसे मैं तो गिफ्ट भी लेके आया था, इसे भाई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आई थिंक रात के 2 बजे मेरा फ़ोन बजता है,
and Bonnet's on the line, and I was sitting and playing poker because I play a bit of poker also. And he says, कल सुबह ग्रांड कार्डोन 6:30 बजे 22 लोग से मिल रहा है, ये लोकेशन है, पहुंच जा, घुस जा तो घुस जा, नहीं तो मैंने तुझे नहीं बताया. I said, no problem. So, went up, changed, showered, got ready. 6:30 a.m. I went into that section. Grant was there, Jared was there. Grant बात कर रहा है, 20-22 लोग होंगे. And Grant Cardone started crying. And if you know Grant Cardone, not a guy who's Indeed, yes. he's right. He's like an alpha male and this that. But I think he just got unwell. And in a gist, what he said is, भाई अगर कल मैं मर गया ना, तो मेरी जो knowledge है, मेरी जो insights है, मेरे साथ अंदर चली जाएगी. Like it'll be buried with me. He said, I want to take my message to the world. मैं बोल रहा हूँ यार भाई, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ बड़ा करना है, ये बोल रहा है कि मैंने कुछ बड़ा अपना मैसेज स्प्रेड करना है. सेल्स का बंदा मैं वैसे ही रहा हूँ हमेशा से. कार्डोन का कोर्स भी किया तो टोटली बिलीवर था, बिकॉज आई न्यू दैट इट्स गोना वर्क. एंड आई सेड, मिस्टर कार्डोन, बोलता है यस. आई सेड, आई वांट टू जॉइन यू इन दिस मूवमेंट. ही सेड, लाइसेंसिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे भी नहीं पता क्या है. आई सेड, जो भी लगेगा करना ही करना है. तो जैरेड को बुलाया. ही सेड, ही गो टू दिस गाय, ही सेड ब्लैंक पेपर पे साइन करा ले दैट आई विल बी योर लाइसेंसी. आई सेड डन, साइन कर दिया. He said, जो पता भी नहीं कितना पैसा लगेगा. I said, टेंशन नहीं है, करना है तो करना है बॉस, राइट. एंड सो Jared is, I met him there, and that was in February. जुलाई के अंदर Jared का फोन आता है. He says licensing is ready, and if you want to go ahead and do this, at the time I think they were asking for $25,000. He's like, $25,000 license fee plus royalty plus कर करा के काफ़ी मोटा अमाउंट था. He's इतना लगेगा, करना है तो हाँ बोल, और अगले हफ्ते फ्लाइट पकड़ के तुझे यहाँ आना है, पर उससे पहले मुझे पैसा चाहिए. तो मैंने अपने फाइनेंशियल प्लानर को फ़ोन किया. आई सेड, जो भी म्यूचुअल फंड है सब बेच दे. ही से, यार भाई वो तो तेरा कॉलेज फंड है, लाइक फॉर योर चिल्ड्रंस कॉलेज फंड, सन एंड अ डॉटर. ही सेज, वो कॉलेज कैसे जाएंगे. आई सेड, टेंशन मत ले, बेच दे, बिकॉज आई कांट यूज कंपनी मनी, लाइक कंसोर्टियम मनी हियर. इट हैड टू बी माई पर्सनल मनी, एंड माई मनी वाज इन्वेस्टेड. एंड ही इज लाइक, दिस इज क्रेजी, मतलब हाउ यू गोना पे फॉर योर सन्स कॉलेज. ऐसे यार जब टाइम आएगा देखेंगे. बेच बूझ के सब ट्रांसफर मारा, and went to Miami, spent 5 days with Grant Cardone, Jared, all these guys, spent time in his office, got trained in licensing. Then we used to have a licensing call every week that was online. July की बात है. November 2018 I came and started the GBA. But that's a Grant Cardone story. So the point being that should I have met him? Chances are probably zero. बट हो गया. मतलब व्हाट इज द चांसेस दैट उसी दिन वो किसी बीमारी से निकल के थोड़ा डाउन था, थोड़ा रोने लग गया. आई हैव नेवर सीन ग्रांट कार्डोन क्राई आफ्टर दैट, राइट. मे बी ऑन अंडरकवर बिलियनियर, जो उसका शो था वहाँ थोड़ा रोया था, पर वो पैंडेमिक का टाइम था. दैट वाज अ बैड टाइम, एंड इट वाज, एंड सम थिंग्स वर मेंट टू हैपन, राइट. सो आई थिंक डेस्टिनी हैड अ रोल टू प्ले. एग्जैक्टली. सो मेरा क्वेश्चन इसी पे है कि आप यू थिंक दैट देयर इज अ लक, क्योंकि मैंने बिल गेट्स को बोलते हुए सुना है दैट I have been lucky. If you read even, Outlier, you would find that, okay, lot of people, those who have made in their life, they have been actually lucky. So do you think that, destiny plays a big role? You were lucky? Big role. And like I told you, right, I'm also like a poker player. And poker के अंदर, and poker is different from तीन पत्ती. तो अगर कोई लोग सोचें यार तीन पत्ती यार इसमें पैसा फेंको पैसा मिलेगा. Poker is very different, right? Poker's got skill, poker's got strategy, poker's got psychology, but poker also has luck, right? And my belief is, like, even the best poker players, 60% component luck का है. So so it's luck, it's psychology, and it's skill. Three things in life is exactly the same. So I believe, okay, that luck can play as much as 60% of a role in life as well. Okay, and then 20% skill, 20% everything else that comes into play. So luck plays a big role. Like my first big opportunity consortium के अंदर, जब मारुति को हमको पहला ऑर्डर मिला मारुति से, इट वाज बिकॉज दाम सिटिंग इन डिंटा सो एन एड ऑफ दिस साइज इन द टाटा प्रेस येलो पेजेस, राइट. हजारों ऐड थे उसके अंदर. सालों पेज खोल के उसने वो ऐड देख के मुझे कैसे फोन कर दिया, और उसके बाद जाके मिस्टर मधुसूदन से मिला मारुति के अंदर. दैट्स हाउ वी गॉट अ बिग मारुति ब्रेक, एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक, मोटा मोटी. बट अगेन इट वाज लक दैट ही जस्ट हैपेंड टू सी अ स्मॉल एड ऑफ दैट साइज. Grant Cardone, flipping that book over, of seeing Tony Robbins, attending Tony Robbins, and hearing that piece and saying, "यार भाई ये बंदा सही बोल रहा है." तो बहुत cases हैं लग के. I mean, even so many people, we've just happened to meet so many, even so many transactions. Like I'll tell you another amazing luck story. मैंने बोला I want to be Asia's largest gifting company. मैं 2012 से बोला I want to be Asia's largest gifting company, right? And I think 2017 की बात होगी again. There was this gentleman, Victor, had come from a Swiss pen company called Prodir. हमारी मीटिंग हुई थी डाइकन एयर कंडीशनिंग में गुड़गांव. बहुत बुरी मीटिंग हुई थी, और हम वहाँ से वापस आ रहे थे. आई थिंक वी वर क्रॉसिंग रैडिसन होटल एयरपोर्ट के पास, एंड ही सेज, व्हाट डू यू रियली वांट, गौरव? आई सेड, आई वांट टू बिकम एशियाज लार्जेस्ट गिफ्टिंग कंपनी.
ही से कैसे होगा, ऐसे यार एक ऑर्गेनाइजेशन है आईजीसी के नाम से, अगर मैं वहाँ ज्वाइन कर लेता तो गेम बदल जाती। इसे कैसे चल रहा है, ऐसे था, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, ईमेल भेजता हूँ तो कोई ईमेल का रिप्लाई नहीं करता, फ़ोन करता हूँ तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। ही से आईजीसी एम्स्टरडैम, ऐसे हाँ, ही से मेरा दोस्त है, ही से वो उसका चेयरमैन है। I said seriously. He said yeah. He said Hans Pule is my friend and he's the chairman of IGC. He said तू मुझे मेल डाल, मैं उसको मेल डालता हूँ and let's see what happens. Right? और IGC ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के साथ काम करने को तैयार नहीं थी। Bad experiences हुए थे, bad उनके system, whatever happened. But by virtue of that introduction and subsequent, meetings and contributions and all that, they took us into IGC. So we are the only, member of IGC. And Ghumte Gandhi, funny part is today I am the president of IGC. Oh. Right? And IGC today is heading towards becoming a $1 billion organization. 41 members around the world, biggest contracts. बड़ी सी बड़ी कंपनियां पकड़ लो, Microsoft, Castrol, biggest companies. We win those contracts, but it's because of IGC. But अगर वो बंदा मुझे ये नहीं पूछता कि what is your goal, and if I hadn't said I want to meet, I want to be a member of IGC, and Victor wasn't there and some other guy was there, he said okay good. But उसने हांस पुले की बात की, दोस्त निकला, मीटिंग हुई और हांस ने भी बोला हांगकांग आ जा, कि हांगकांग आ जा, अगर वहाँ तेरी बात समझ आएगी तो फिर आगे देखेंगे। तो one thing leads to another. Big believer in luck. I think it is also about taking initiatives. Like अगर वो 22 लोगों में से उस वक्त अगर आपने एक blind faith को रखते हुए कि नहीं मतलब मैं कर लूंगा, irrespective आप जितने पैसे लोगे, आप blank paper पे साइन कराओगे, I am okay with that. या यहाँ वाले केस में भी even that okay, you are sharing your heart with somebody. Like people don't generally share about how they are doing in their life, especially when it comes to money. वो कहते हैं oh हम तो we are here already. Generally people don't, they hide their failures. सही बात है। तो that too, and I think the other thing that even my wife says this a lot, that अब ज़्यादा publicize मत किया करो, before something happens नजर लग जाएगी, right? So I'm like boss डाल दो यार, my thing is put it to the universe, put it to the world, होना है तो हो जाएगा, exactly, right? अगर नजर लग जाएगी तो पहन लेंगे कुछ हाथ, बहुत कुछ पहन लिया, so that's to counter those kind of things. But I believe that put it out there, and that should inspire people, that should inspire your team, that should inspire your clients, that should inspire people you meet with. Right, so that is important. So put it out to the world. एक चीज और during this conversation I noticed that आपने I think you said that you are almost about to be 50 and कुछ लगभग 8-9 साल पहले you started the sales coaching, and that is when you took the leap of faith कि नहीं ग्रैंड कार्डन के यहाँ पे जाएंगे and वहाँ पर जाकर के I'll attend some meetings or those conferences and stuff. Correct. So इसका मतलब है कि आप कभी भी शुरू कर सकते हैं irrespective of your age. 100%. आपके लिए कोई age never a barrier, should not be a barrier. No, absolutely. So what is your take on this? Because a lot of people they क्योंकि बहुत सारा टाइम क्या होता है कि आप जॉब में हैं या आप कुछ और कर रहे हैं, मे बी अंडर द प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, और उसकी वजह से आप वो नहीं कर पा रहे जो आपको करना था. यू आर मे बी इनटू द बिजनेस, मे बी ट्राइड योर लक कपल ऑफ टाइम्स, फेल्ड, बट अभी लगता है कि नहीं यार, नाउ वी आर 40 या वी आर 45 और 50 इवन फॉर दैट मैटर. सो अब क्या करना? अब look at your office, right opposite your office, okay, there's a restaurant, okay, which restaurant is that? KFC. Right. अगर हम कर्नल सैंडर्स के बारे में बात करें तो कर्नल सैंडर्स की उम्र क्या थी जब उन्हें KFC स्टार्ट किया था? 62. राइट? सो द पॉइंट इज इट्स नेवर टू लेट, ओके, एंड द पॉइंट इज नेवर टू अर्ली. बट इसमें पता है क्या है, एक पॉइंट ये भी निकल कर आता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि केस स्टडीज के बारे में बात मत करो. लाइक जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे जब हम लोग बात कर रहे थे कि आप उंगलियों पे यूनिकॉर्न्स गिन पाएंगे या जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, पर कितने फेल हुए हैं उनके बारे में कोई भी देयर इज नोबडी टू टेल यू. सो लॉट ऑफ पीपल बेसिकली डिस्करेज you in some way or the other also. Yeah, so two conversations. One is, see, and I know when the unicorn conversation started, जब Amazon was a success story in e-commerce, सब लोग e-commerce के अंदर घुस गए. Okay, and I know this because we had so many e-com clients, right? Fashion and you and ये and वो, सब खत्म हो गए. एंड में कितने रह गए अपना? you got Amazon, you got Flipkart, maybe you have 2-3 others, Myntra which was also acquired, etc. So for the 3 that succeeded, there were thousands that failed. Agreed, okay, in that, and the same is going to happen in the AI space. अभी AI का पागलपन है साला, AI कुछ भी लगा दो, which happened in the .com time as well, right? 99-2000, I mean that's a time where consortium was just trying to take off. I know we had Make My Trip was our client, okay, InfoEdge was our client. These are 2 guys who survived, okay, Deep Kalra, Sanjeev Pichindani, these are the guys who survived. Look at the guys who didn't. I know हमारे पास eGuruKul था, हमारे पास Bid and Buy, हमारे पास मतलब India.com, हमारे पास 100 client होते, .com वाले होते थे. All of these guys we had, right? But out of that, how many survived? Maybe 3. So
in that conversation, and the same is going to happen in the AI space as well, that there'll be countless more failures than there will be successes. Coming back to this space, okay, again, KFC is a case study, Colonel Sanders is a case study, but there are hundreds, if not thousands of people who have also gone ahead and done very well. I'm not saying they become global multinationals, okay, but they have gone ahead and built sizable businesses, okay, even at, ages where people have, taken retirement and then started their companies with the corpus they've had. Achhe companies banaye. I'm saying 50 crores, 100 crores, 500 crores, 1000 crores. Many would have even, gone public on the SME exchange and the big exchange. Countless studies, okay. Again, it's probably a combination of the fact that, there was a bit of luck, there was obviously skill, there was, people who came together, there was a need of the market. आज जब कोई मेरे पास आता है बोलता है corporate gifting company start करनी है, I say भाई मर जाओगे, right? But 1996, 97 when I started out, is very different. That time there was, there was a different need, it was a different environment. Right. People didn't even know where to go. मतलब बोलते हाँ जी करोल बाग के अंदर एक मार्केट है, सिद्दीपुरा मार्केट, आप वहाँ जाओ. मतलब वहाँ तो जाओगे तो वैसे ही लुट जाओगे. जगह ठीक नहीं है, right? And I mean, while there might be 2-3 people who are okay there, 7 or 10 are not people you should be working with over there. So the point is, but today, now the thing is, because you've got, so much availability in terms of, quick commerce, e-commerce, people who ask me, Diwali season कैसा रहा? I said, boss, इस time कमाया तो retailer ने कमाया, right? And quick commerce वाले ने कमाया. Traditional B2B businesses and even e-com platform did not do well at Diwali this time. So market changes, right? And again, point being that it's still never too late to start. I would still say that. And again, when someone says that I want to go down the role of entrepreneurship and I want to, I want to now try something and this is what I've been doing all this while, I always have a conversation and I say, where it makes sense, I say, kar le. Just 3 or 4 weeks ago, somebody called me, corporate gifting company hai, and they said that, बिल्कुल orders नहीं है, खर्चे भी नहीं निकल पा रहे. I said, how old are you? He said, 34. I said, what does your wife do? He said, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं. I said, बच्चे इसे नहीं है. I said, where were you working? उसने कंपनी का नाम बताया. I said, will they take you back? He like, sir, कैसी बातें कर रहे हैं? I said, नहीं. I said, because, where you are right now with your financial position and wherewithal जो है, it's better that you go back to a job. Right? I know it's a hard decision, but I think it's better you go back to job. And the reason being, he had no capital. Because आज अगर हम gifting industry के बारे में बात करें, which I know a little bit about, today, forget creativity. सब लोग बोलते हैं यार ये बड़ी अच्छी creativity है इनकी, बड़े अच्छे design है ये and वो. End में आपके पास पैसा कितना है? Because when you go to a corporate, okay, let's take any corporate, let's just say you go to a FMCG company, बोलेगा हाँ ठीक है आपकी कंपनी ठीक ठाक लग रही है, आप माल भेज दो, पैसा आपको 60 दिन के बाद मिल जाएगा. अब पैसा आपको 60 दिन के बाद मिलेगा, आप जहाँ से माल खरीदोगे आपको तो पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे. अगर आपके पास वो ब्रिज फंडिंग नहीं है, right? And sometimes when these orders get, larger and larger, maybe initially आप कहीं से बैक बोरो करके आपने, arrange भी कर दिया. But एक बार जब cycle घूमनी start होती है, and you got commitments to, let's say, rent, logistics, salaries, interest cost, paying vendors. But suppose for some reason, आपको लग रहा है कि हाँ यार 40-45 दिन के अंदर पेमेंट आई जाएगी, मैं SME रजिस्टर्ड हूँ, पेमेंट आई जाएगी. कभी कभार कंपनी आपको यही बोल सकती है यार तेरे तो बिल खो गया यार, वो बिल फिर से भेज दे. तो 45 days को then become 70 days. इंटेंशन और नियत उनकी खराब नहीं थी, बट द पॉइंट इज क्या अगर आपके पास वो पैसा नहीं था तो आपकी तो लग गई. रिपीट ऑर्डर उन्होंने दे दिया और आप अपने वेंडर के पास गए कि यार मुझे आप माल दे दो, अब तो तेरा पहला का बिल क्लियर नहीं हुआ, जब पहला बिल क्लियर नहीं हुआ तो मुझे और माल क्यों दूं? So these are things that kind of come into play. So I told this guy, I said, you have zero capital left right now, you have to go back to job, you can't survive in this space. But a lot of people say, and rather I have heard you also many a times saying that burn the boats. So unless you burn the boat, you will always rely on plan B, C, D or maybe X, Y, Z. तो इस पे realistic होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? So burning the boats, being 100% committed, all of these are non-negotiable. Like you have to be, करना है तो करना है, नहीं तो मरना है, right? And burn the boats came from the Julius Caesar story, which is exactly around that. Right. It's a powerful story. I tell it all the time, and I tell people you can even burn the boats when it comes to your commitment towards even your work as a employee in an organization. The issue that I have with a lot of people today is that they're jumping from job to job because they're only jumping for the next pay hike or the next promotion in the organization, but they're not committing to what they do, right? So you have to burn the boats even as as an employee as well, right? And of course, like even in the space like of being an entrepreneur, absolutely go ahead and burn the boats. But when the point is when the writing is on the wall, when there is nothing that's going to come your way, you have no funding, you have there's nothing that you can actually continue in your line, but you're young and you can still go back, still work for years and still try again, do that. But it's just that right now, and the guy's telling me, he's like, sir, आप तो कोच हो, मतलब आप कैसे एडवाइस दे रहे हो? ऐसे भाई जिस इंडस्ट्री के अंदर तू है
और जो अभी तेरी पोजीशन है और जो अभी तेरी सिचुएशन है, this is the best advice for you right now. You know, and the other thing that is very interesting, where everyone's saying, you know, quit your jobs, become an entrepreneur. If everyone starts thinking entrepreneurship, okay, who's going to be on the teams? Who's going to be, you know, steering the ship? Exactly. So that's another thing that concerns me. And I always say entrepreneur versus entrepreneur, right? And an entrepreneur is someone who's working in the organization but is taking complete ownership. Okay, maybe has, you know, some kind of, you know, role in the profit share as well, or become so valuable to the organization where, you know, the management says, okay, you know, here is, you know, a certain incentive that comes your way, or a certain, you know, a stake that comes your way. So all of those are far better bets. आपका कोई risk नहीं है, right? You're just putting in 100% effort. Okay, you're just being 100% authentic, full integrity के साथ आप काम कर रहे हैं, and risk अभी भी, you know, owner का है और you know, top management का है, but you're still putting in your 100%, you know, to grow that division, to grow that, you know, that segment, and who knows where that could lead in due course. So I always say entrepreneurship before entrepreneurship. That's always my advice. You said that, you know, अगर हर इंसान entrepreneur बन जाएगा तो you know, employee कौन होंगे, like, you know, who will be working in your team in that case? So do you think that, you know, a lot of people, those who are working either in the organization as an employee or even, you know, starting out their business, the primary motivation is somewhere money, कहीं ना कहीं वो पैसा है जिसकी वजह से वो शुरू कर रहे हैं? I mean, definitely when you're starting out, you know, money plays a big role, you know, obviously, and everyone has aspirations, you know, they want, you know, to have nice clothes, they want to have, you know, possibly a good home to live in, you know, a vehicle that, you know, gets them back and forth and all that. So these are, I mean, when they talk about, you know, even Maslow's, you know, law and all of that, you've got, you know, all of that as well. So obviously you have the basic needs, right? Sometimes it's aspiration and sometimes it's desperation, right? Desperation matlab karna hi hai. Right? Like even when I started Consortium, it was not aspiration. At that time, I didn't want to become one of the biggest companies. मतलब उस time लगी पड़ी थी अगर नहीं करते तो actually, you know, सड़कों पे आ जाते. So it was about the desperation. It was the need to, you know, go ahead and really do something. So I think money is an interesting piece, especially in today's world where everyone is on, you know, Insta and social media and everything else, and they see, oh, you know, who's holidaying in which, you know, city or country, or, you know, in wearing what clothes or what brand. And so people, of course, you know, you go to a mall and we're always being bombarded with, you know, messages that, oh, you know, you do this and you buy this and, you know, all of that will happen. But I think there also comes a stage where then those things don't matter to you anymore. Like the money doesn't matter to you anymore. You know, the brands don't matter to you anymore. I mean, some of my team comes to me and they're like, why do you draw such a low salary? Like, you know, my salary is actually lower than some people in the organization. And they're looking at me and they're like, why? I'm like, why? Karna kya hai wo paison ke saath? Right? Because right now my mission is to give back. So hence, I don't draw a big salary. But I know some people who draw like, you know, a crazy big salary. Because they still got, you know, all those aspirations. So different things for different people. I think starting out, you know, money is an important driver, but over time, it can change. Gaurav, you said that, you know, बहुत सारे लोग पैसे के लिए, you know, शुरू करते हैं, but कहीं ना कहीं, you know, it changes over a period of time. Your mindset changes कहीं ना कहीं. Lot of people say even these days that, you know, आज की डेट में अगर आपको अमीर बनना है ना, तो it is very very easy to become very rich. So पहला तो ये कि क्या money should always be the driving force, या there is something else, like, you know, you are today the, you know, a leading sales coach, you have a business running, but आप उसको, you know, you are trying to give back as much as possible, but simultaneously you are trying and helping people and organizations as well at the same time. Correct. Coaching करके, consulting करके. So क्या over a period of time हर इंसान का कहीं ना कहीं change हो जाना चाहिए purpose, या वो शुरू से ही हमेशा, you know, कि हाँ मुझे तो सबसे अमीर बनना है? It's a very interesting question. So money can never be your why. Okay, money can never be your purpose. Money can be a byproduct of your why. So you're doing what you're doing, और उसका जो result होगा, okay, that is going to be, of course, you know, maybe fame, fortune, success, and of course, you know, money. Because if you say money is my only motivator, okay, money is my only, you know, why for doing this, you are going to fail. Because there are some days where, you know, the money is not going to come in, or some weeks or months the money is not going to come in, और फिर आप question करेंगे कि यार मेरी choices क्या थे, क्या मैं, you know, गलत तो नहीं कर रहा हूँ. So money can never be your, you know, your motivator. The other aspect you spoke about is the easy money aspect, right? आजकल हमें क्या बताया जा रहा है Instagram के ऊपर, YouTube के ऊपर कि स्टॉक ट्रेडिंग करो, नोट छापोगे, ठीक है? मतलब स्टॉक कोचेस जो हैं एंड जो स्टॉक रिलेटेड पॉडकास्ट जो हैं, they're probably like the most watched, right? Right. Most of them don't even have, you know, any kind of, you know, certification, accreditation, but
एडवाइस देने में क्या है यार, मतलब दे ही रहे हैं. I've been going to colleges and I've been speaking at colleges. I go there because I think colleges and kids today need a lot of mentorship and advice and all. And एक दिन मैं एक मैनेजमेंट कॉलेज में गया था, पहले सीट के ऊपर एक बंदा बैठा है और 100 Zerodha का ऐप खुला हुआ है. ऐसे आप क्या कर रहे हो? ही से नहीं जी, बड़ी अच्छी टिप मिली है आज टेलीग्राम पे, तो मैंने बस 5,000 रुपये से जो पापा ने मम्मी ने दिए थे उसके अंदर मैं ये ऑप्शन कर रहा हूँ एंड बड़े नोट छापूंगा. तो मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट देखा, आई नो लिटिल बिट अबाउट चार्ट्स एंड ऑप्शंस एंड ऑल दैट. आई सेड 45 मिनट्स की टॉक है, जब तक ये टॉक खत्म होगी ना तेरा अकाउंट जीरो होगा. बोला अरे सर आपको तो कुछ नहीं पता. ऐसे नहीं, ठीक है. एंड 30 to 33 मिनट्स इनटू द टॉक आई सॉ मोबाइल फोन बंद अंदर, मतलब बड़ा डिप्रेस लग रहा है बंदा. टॉक खत्म हुई, बात कर ऐसे क्या हुआ, इसे हाँ जी वो उड़ गए सारे. हो गया. So the thing is, people have been told that F&O karo. I mean, in our offices we had people who again they saw some video or some coach and everything else and they said अरे यार यहाँ तो बड़े नोट छापेंगे. काम धंधे पे फोकस नहीं हो रहा, ठीक है. मतलब ये देख रहे हैं कि आज मतलब ऑप्शन ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, निफ्टी की क्या रेट वेट चल रही है. सो द पॉइंट इज that is not the way to make money. Okay, even in the stock market, I mean, I've gone bust in the stock market many times. Okay, many times because of indiscipline, because thinking that अरे यार कुछ लगाओ, मतलब बड़ा contract करो. हर्षद मेहता के time में I was actually wiped out because I was doing badla trading at that time. I was later on in college again. I took some stupid contracts. Every time my money just got wiped out to the extent that between 2002, I remember जब मारुति का issue आया था, all the way till I think 2015-16, I didn't even trade in the market. Okay, because I was that badly burnt. So that's easy money. Okay, that's not the way. And I recommend to everyone that don't play that game. That stock market में future F&O करके बड़ा नोट छापेंगे. Stock market is a slow process. You got to do your SIPs. It's boring. Your returns might be like 8, 10, 11, 12%. But compounding करते ठीक है. It's going to give you some money. Where else can you have easy money? I mean, sometimes you might go out and in a business चौके छक्के आपके लग गए, आपने कुछ अच्छी पूंजी कलेक्ट कर ली. But again, how is that being reinvested in marketing, in product, in service, in outreach? All of that becomes very, very important. The sad part is that making money takes time. Okay, and I mean I'm saying sad part because सच्चाई है, but it's boring. Today people want instant note छापने. Right? They want to go to a casino and they want to take all their money and they want to put it on a roulette on a number and hope that number hits. Boss जाएगा. So that is something that gambling mentality has to go. Again, there'll be a small percentage and they'll be like देखो यार इतने कम टाइम में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया. लेकिन again coming back to that unicorn / that Amazon story and all those big unicorns you spoke about, how many guys have घुसोड़ inside as well. Look at guys like look at Sanjeev Bikhchandani, InfoEdge, Naukri.com, how much he had to struggle there, right? Deep Kalra, again these are people I've known because I've seen their stories upfront. How much he had to struggle to make my trip to where he is. And today everyone says, अरे यार कहाँ से कहाँ पहुँच गया. But मेहनत बहुत लगी थी, right? And yeah, I mean, sometimes like I said, you could like swing the bat and hit that chakka, but what happens in the long term? Consistency, systems, processes, luck, mentorship, all of these things will play a big role. क्योंकि हम बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं उसके लिए ही ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं और हम फेलियर्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं. नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड, अगर हमको सक्सेसफुल होना है, बिजनेस बनाना है, बड़ी चीज़ करनी है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखनी चाहिए. एंड यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं आपकी वो जो सेल्स कोचिंग और कंसल्टिंग वाली जो टेक्निक्स है ना, उनको भी जानना चाहूँगा कि वो किस तरीके से आप किसी भी बिजनेस को कंसल्ट करते हैं. For sure. So I would say again, few things are very, very important. One is correct guidance and mentorship, right? That aspect is very, very important. Like मैं हमेशा किसी को बोलता हूँ, अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आप किसी के साथ चढ़ोगे. ऐसा बंदा जो पहले कभी नहीं चढ़ा है, कि someone who's an expert and has done it many times. Why did I find Grant Cardone? Because I said I want to be the best in sales and I want to find the number one in the world, right? So that's how I reached out to Grant Cardone and I said if I have to be the best, I have to learn from the best. So that was my mindset, and that's what I recommend to a lot of people that try and identify the best possible person that you can try and get mentorship. And again, it doesn't have to be like the number one in the world, but the number one that you have access to, you can actually afford. Because कुछ लोग हैं जो maybe ग्रांट को $50,000 आज नहीं दे सकते, but who is the best that you can afford. So you go out and have that conversation. So mentorship is very, very important. Second aspect is that again product to market fit. Like जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका सर्विस है, क्या मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है, is that
recurring customer going to keep coming your way. That aspect, of course, is very, very important. Money and capital, we've already spoken about. That's something that's very, very important. Luck is a very important concept as well. And in the end, it's mindset. Like one of the things you have here is this 10x lapel pin, right? And 10x is a mindset. And लोग सोचते हैं कि यार मैं आज इधर हूँ, मुझे उतना इधर पहुँचना है. Let's say I'm on point A, I want to go to point B, whatever that point B is, and मेरा इतने actions लेने में, इतने steps लेने में काम हो जाएगा. But the truth and what the 10x rule states is that you'll actually have to do 10 times of what you thought. तो अगर आपने अपने इतने clients ऐड करने हैं या इतना आपका turnover बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको 4 नहीं 40 मीटिंग करनी होगी. उसके लिए आपको 3 client नहीं 30 client चाहिए होंगे. So everything gets multiplied by 10x. So that's the 10x, that you have to be willing to put in 10 times the amount of effort. और ये नहीं कि मतलब यार success मिल गई तो आप foot off the pedal. Right? Even in my TEDx talk, I talk about attitude, action, acceleration. So जब आपके पास momentum है, जब आपको wins आ रहे हैं, जब आपने अपने targets hit कर लिए, तो that's not the time to take your foot off the pedal. Okay, the wind is behind your back, momentum आपके साथ है, body language आपकी अच्छी है, आपको लग रहा है कि I'm very lucky, boss, pedal दबाओ, गाड़ी भगाओ, right? So acceleration is very, very important. So these are some of the very important elements that come in, and of course we can talk about other tips and advice on sales as well. So I would love to know, of course, like क्योंकि इवेंचुअली किसी भी बिजनेस की बैकबोन सेल्स है. अगर सेल्स नहीं हो रही है, आप बाकी सब कुछ फिनोमिनली वर्क कर रहे हैं, तो पैसा नहीं आ रहा इवेंचुअली, which means that you are not going to survive. Correct. So eventually, because you are a leading sales coach, I would not let you go just without even sharing few nuggets on the sales. Of course. क्या है वो चीजें जो एक इंसान को, एक एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि क्या है ना कि हर एंटरप्रेन्योर के अंदर हर क्वालिटी नहीं है. वी हैव डिस्कस अबाउट दिस, लाइक इसीलिए को-फाउंडर्स लाए जाते हैं. Correct. सो आई वुड अंडरस्टैंड दैट कि सेल्स में वो क्या चीजें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी चाहिए, सो दैट दे कैन सक्सीड. Yeah. So of course, you spoke about sales advice. So one of the top piece of advice I give all salespeople is that fortune जो आपका है वो follow up के अंदर है, right? Suppose आप market के अंदर एक product के लिए हैं, I come and meet you, or you see my content somewhere. What is the chance that you'll actually buy from me on the first contact? Like पहली बार आप मिले और आप मुझे order देते हैं. What are the chances? नहीं, so they are very ना के बराबर, ना के बराबर, right? So in fact, what the study says, and it's called the 98-2 rule, that पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं, okay, the chance, or even connect with them on the internet, etc., the chance of closing them is only 2%. So 98-2 rule कहलाता है. So the first time it's only 2%. जब आप second time मेरा content कहीं consume करें या मेरे से मिले या कुछ आपने देखा, बोले चलो ठीक है, तो that 2% goes up by another 3%. तीसरी बार जब आप देखते हैं, ट्रैक करते हैं, तो आप बोल रहे हैं यार चलो ठीक है, लिटिल मोर कन्विंस, गोज अप बाय अनदर 5%. चौथी बार इट गोज अप बाय 10%, which means 80% of all business will close between the 5th and the 12th contact, sometimes even more. मतलब कभी कभार आप किसी के साथ मिले जा रहे धंधा नहीं आता, बट जब आता है तो मतलब हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद. तो फॉर्च्यून जो है वो आपका फॉलोअप के अंदर है. द फनी पार्ट इज जब कोई लीड आती है, जब कोई रेफरल आता है, तो मोस्ट पीपल सेकेंड या थर्ड टाइम के बाद फॉलोअप भी नहीं करेंगे. And what that means is that 2 + 3 + 5, 90% धंधा तो आपका वहीं unclosed रह गया. So fortune जो है follow up के अंदर है. So follow up is very, very important in sales. So which is your rule number 1, follow up. Follow up is definitely rule number 1. Okay. The second aspect is that you have to have some degree of delegation. You have to have a team. जब मैं Grant Cardone से मिला, जब licensing के बारे में start की, तो I knew that उनके successes क्या थे. जैसे आपने मुझे पूछा कि what was the big mistake that you made, तो I asked Grant Cardone, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? और उन्होंने बोला GB 17 साल मैंने सब कुछ खुद ही किया. खुद का मैं कंटेंट बनाता था, खुद डिलीवर करता था, खुद बिल बनाता था, खुद बिल डिलीवर करता था, खुद फ़ोन उठा के पेमेंट मांगता था, खुद जाके अपनी प्रॉस्पेक्टिंग करता था, सब कुछ मैंने खुद ही किया 17 साल. He said that was my biggest mistake. So I realized that boss, मतलब ये तो नहीं हो सकता. So consortium में already टीम थी, but GBA, before I even started, I started hiring for the GBA because I knew that you can't do everything yourself. So teamwork is very, very important. You'll have to build some kind of team. And again, some of your viewers might be thinking, भाई हमारे पास तो खुद के पैसे नहीं है, टीम कैसे बनाएंगे? But again, today the good part is that AI is playing such a big role. Gig economy, right? You can go to sites like Fiverr, or put things out, and there are people who come and say, okay, I can do your designing or your editing or your accounting. So gig economy is so big, which was not there back in the day. So again, and I always say, boss, बहाने बना लो या पैसे कमा लो. दोनों नहीं कर पाओगे. Okay, so either you can make money, you can make excuses, you can't do both. So hence, don't make excuses. Okay, go out there and find a solution, innovate. So advice number 2 would be
start building, a team to help you in places where you're not good. जब मैंने consortium start किया, accounting मेरी weak थी, तो मुझे पता था accountant चाहिए. Designing का इतना idea नहीं था, and I was very slow. So I said, चलो Coral पे कोई बैठेगा, design बनाएगा. So a designer had to come in. I knew someone had to come in operations. I knew someone had to come in, to take care of like basic runner, activities and all that. So it is going to be the teamwork that's going to be very, very important as well. So you think that a lot of people, those who fail in the businesses, are because of this? One of the reason can be this. If they try to do everything themselves, yes, because what happens is overwhelm comes into place. Right. आप सोचते हैं यार मैं क्या करूँ, right? मुझे ये भी करना है और ये भी करना है और ये भी करना है, तो आप क्या खुद कर पाओगे, right? So but Grant Cardone, like he was doing things for 17 years continuously, and still he could do 10x. But he struggled immensely. Indeed. And अगर आप Grant Cardone देखें, like Grant Cardone की journey थी जब 21-22 साल के, he was a drug addict at the time. Right. And he was coming out of that. From 21 to 26, he struggled immensely because he did not burn the boats. He said, चलो यार आज मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूँ, इंश्योरेंस नहीं तो गाड़ी नहीं तो गद्दे नहीं तो कुछ और. So he just kept jumping. At 26, he decided that okay, boss, line खींच ली, अब करना है. Okay. And when did Grant Cardone really blow up, like really become big? It was during 2007, 2008, right? After he wrote, the 10x rule, during right. the big recession. So you can say, and today Grant is what? He must be now 65, 66. So he struggled for many years. He struggled, but those 17 years, that means from the age of 21 to 38, right? He was trying to do everything himself, which is a disaster. And he said, "Agar मैं वो नहीं करता," he said, "today I'd have probably been one of the richest people in the world." So the rule number 2 is now the teamwork. Yeah, teamwork, or team building. Team building, some degree of delegation. You can't do Right. everything yourself. What are the other big ones? I think the other very, very big one is that you have to get out and prospect. Okay. And agar hum, and the reason why I say this, prospect means, you get out to the world. Like today, in a way, coming on a podcast is prospecting because, your audience gets to know me. I get to know a bit about you. Right. Your audience will engage. So even putting yourself out in the world. Okay. Because जैसे हिंदी में कहते हैं, right? जो दिखता है वही बिकता है. Right. And of course, today is about जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है. So you have to work towards, and Grant used to use this term called omnipresence. आपने कृष्ण भगवान की बात की, तो भगवान का ये है कि वो सब जगह दिखते हैं. Right. So can you also become omnipresent? And that can only happen if you go out and prospect. मतलब आपको अगर आप पॉडकास्ट पे आ सकते हैं तो पॉडकास्ट पे आएँ, अगर आप एसोसिएशन ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ अपना कंट्रीब्यूट करें. जैसे आपको बताया कि 14 साल मुझे BNI के अंदर हो गए. लोग बोलते हैं भाई तू BNI क्यों जाते रहता है? I said because it's a place where I go on a Wednesday morning. I meet with 100 business owners, 20 other people. वो आके देखते हैं, बोलते हैं भाई आप यहाँ भी हो. And so it's that bonding, it's that relationship that gets built up over time. What are the other ways you prospect? अभी क्या है कि पैंडेमिक के बाद लोग बहुत complacent हो गए. बोले यार ईमेल भेजा, Zoom कॉल कर ली, राइट. पॉडकास्ट, आप आज का जो पॉडकास्ट है यू कैन डन वर्चुअली आल्सो ऑन द इंटरनेट ओनली. बट यू से नहीं भाई मुझे आपसे हाथ मिलाना है, मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है. सो ऑलवेज मीटिंग इन पर्सन इज ऑलवेज 10x बेटर, राइट, इफ नॉट 100x बेटर. And I always believe that iMail, like आंखों का मेल, it will always beat email. right? Oh, amazing. मैंने भी किसी अपने स्टूडेंट से सुना है, बट सच्चाई है. बट लोग क्या है कि पैंडेमिक के बाद बहुत लेजी हो गए. लाइक यार कंप्यूटर के पीछे बैठे हैं ना, अपना ईमेल भेज दिया, जूम कॉल कर लेते हैं. यू हैव टू गेट आउट एंड मीट पीपल. ओके, ईदर गो टू देयर ऑफिसेज, कॉल देम टू योर ऑफिस, मीट फॉर चाय कॉफी, बिल्ड दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, मे बी लिंक्डइन पे बड़े स्ट्रॉन्ग है, इंस्टाग्राम का अकाउंट ही नहीं है, राइट. एंड आई एम लाइक भाई इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं हो? दे लाइक नहीं यार इंस्टाग्राम पे तो बच्चे हैं. ऐसे आपका प्रोडक्ट क्या है? तो उन्हें बताया ऐसा है, ऐसे B2B में ऐसे. हाँ, आई सेड आपका टारगेट ऑडियंस, माय टारगेट ऑडियंस इज CEO. ऐसे CEO खुद खोल के मतलब सामान ढूंढता है क्या? आई सेड ही इज प्रॉब्ली गिवन हिज असाइनमेंट टू फाइंड योर प्रोडक्ट और सर्विस टू अ गाय और अ गर्ल हु जस्ट कम आउट ऑफ कॉलेज, मे बी 21, 22, 23 years old. दैट पर्सन इज नॉट एक्टिव ऑन LinkedIn, इज एक्टिव ऑन Instagram. आप Instagram पे हो ही नहीं, आप तो मिलोगे ही नहीं उनको. Indeed. भाई मैंने तो सोचा ही नहीं. ऐसे अभी जाके इंस्टाग्राम का अकाउंट खोलो, राइट. सो अगेन यू हैव टू बी ऑमनी प्रेजेंट, सब जगह दिखनी चाहिए, राइट. यू हैव टू बी एट इवेंट्स. अगर आपके इंडस्ट्री के इवेंट्स हैं आप करो, राइट. अगर आपका पॉडकास्ट है, ग्रेट. अगर नहीं है तो सोचो कि क्या कैन स्टार्ट अ पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल और वेबिनार्स, व्हाटएवर. पीपल हैव टू सी यू बिकॉज अगेन इफ दे डोंट नो यू दे कांट फ्लो यू, right? If they don't know who you are and what you do, and GC would say this all the time, you can be the best, okay, you can be the best in your industry, okay, but if you're not the best known, it doesn't matter. And that can only happen with prospecting. तो prospecting बहुत important part है. And I'm very big on goals, right? हमने इतनी बार goals के बारे में बात की है, लेकिन sales person, entrepreneur, anyone who wants to be successful in life, they have to prospect.
So prospecting for me is more important than even goal setting. Goal setting I might do once a week, prospecting I have to do every day. So again, to your viewers, advice ये है कि दिन के अंदर 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के आपको prospecting करनी ही है, राइट, नॉन नेगोशिएबल है. अगर आप छुट्टी पे भी हो तो वहाँ भी अपना फ़ोन निकालो, वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे डालो, या एक थैंक यू मैसेज रिकॉर्ड करके आप किसी कस्टमर को भेज दो कि थैंक्स टू यू, आई एम हियर एंजॉइंग विद माई फैमिली और आई एम एंजॉइंग विद माई फ्रेंड्स. अगर आप का अपना हेल्प नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, तो आज ये नहीं हो पाता. सो दीज आर ऑल वेज दैट यू एक्चुअली गो आउट देयर एंड प्रॉस्पेक्ट, राइट. सो प्रॉस्पेक्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. So that'd be number 3. That is number 3. Okay, so we have follow-up, we have team building, and now we have prospecting, which means basically being omnipresent, so that you are recognized, you are building your own personal brand. Yeah. I would say another big one, and you spoke about relationships, and it's very interesting. And Grant learned this from a Indian business owner very interestingly. So he said, एक कागज पे आप contact लिखो, CONTACT. Right? और उसी कागज पे, if you're doing this, try this right now, write down contract, CONTRACT. And he said, what's the difference between a contact and a contract? और लोग बोलते हैं यार कॉन्टैक्ट मतलब आपके मोबाइल फ़ोन पे या आपके डेटाबेस में there's a contact. कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको काम धंधा मिल गया, PO मिल गया, काम हो रहा है. So it's not that. Look at contact, look at contract. Okay, the difference is the letter R, and that R stands for relationships. सेल्स के अंदर relationships is paramount. धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर, entrepreneurship के अंदर relationships is paramount. Because गलतियाँ होंगी, mistakes will happen, but the relationships will see you through. और relationship ऐसी चीज़ है जो एक दिन में तो नहीं बन सकती, but relationship ऐसी चीज़ है जो हर दिन improve हो सकती है, right? So as you keep meeting with people, keep engaging with people, interacting with people, that relationship will get better. So build relationships. That's very important. That's number 4. But simultaneously, I have a cross question on this one, because when you have sales targets, आप जाते हैं, आपको पता है कि आपको इतना तो धंधा लाना ही लाना है. Maybe if you are working for any organization, say as a sales head or something. और उसी के अंदर क्या होता है कि बहुत बार ना लोग चेप करा जाते हैं चीज़ें, एंड वहीं पे कहीं ना कहीं वो जो रिलेशनशिप के बारे में जो आपने बात करी, वही रिलेशनशिप जो होता है वो मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने चेपा था उसको सामान जो उसको नहीं करना चाहिए था आपको, वो खराब हो जाता है. तो यहाँ पर बेसिकली माय क्वेश्चन इज दैट हाउ टू बेसिकली स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन your sales targets and at the same time building a relationship with people, the genuine ones rather. So एक कॉलेज पे मैं गया था, गाजियाबाद के अंदर एक कॉलेज था. प्रिंसिपल ने बताया कि अब आके हमारे स्टूडेंट से बात करो. तो उससे पहले उन्होंने बोला कि आके हमारे साथ थोड़ी चाय वाय पी लो. ठीक है, बैठे उनके कमरे में. तो आई वाज देयर, गौरव राजपूत हमारे जो कैमरा के बंदे मेरे पीछे बैठे थे. तो चाय कॉफ़ी हो रही है. शी, आप सेल्स के बंदे हो? ऐसे हाँ. कुछ वही बंदा जो गंजे को कंगी बेचता है. आई सेड ओके. एंड पीछे राजपूत बोला सर उठ के चलते हैं, मतलब ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है. I'm like, मैडम हो सकता है कि you engage with those kind of sales people also, but I said हम वो sales के लोग हैं जो गंजे को या तो hair transplant बेचते हैं, या एक wig बेचते हैं, एक solution बेचते हैं. So the perception was that sales का बंदा, and this happened a lot in insurance because I trained a lot in insurance, कि आप उनको चेप के चले जाओ, ठीक है, डील कर लो, मतलब आगे तो देखी जाएगी. वो किसी और की प्रॉब्लम है, क्लाइंट सर्विसिंग हो या रिन्यूअल का जो बंदा होगा वो देखेगा, भाई मैंने तो चेप के मैं चला गया. Now the problem is that in today's world, where you have reviews, you have word of mouth, where you have virality on internet and all that, boss जो sleazy sales person है, जो गंजे को कंगी बेचता है, बंदा खत्म है, राइट. उसका करियर भी बहुत लिमिटेड है. मे बी इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही माइट स्टिक फॉर सम टाइम, देन वहाँ से अपना जंप कर रहा है, बट ही और शी विल बी समवन हु विल गो डाउन. तो sleazy सेल्स पर्सन जो है, जो एक टाइम में exactly ये करता था, so अब खत्म है वो. Okay, so there is no way that's actually going to happen, right? And again, I come back to the question of the why element. Like, why are you doing this? Is it only for the money, or is it something more? And I was teaching some kids at IIT Delhi, 17, 18, 19-year-olds recently, and I was trying to give them an example that the most convinced will be the most convincing. So before you go out to sell a product in the market, right, आपको conviction होना चाहिए कि भाई मेरा product फाड़ू है, like this is a great product, this is really going to help my audience. And when you are that convinced, you will go out there and be the most convincing. And I gave them example. I said, imagine एक अफ्रीका के अंदर नॉर्थ कॉन्गो, साउथ कॉन्गो, राइट, हो सकता है अ वॉर ब्रेक्स आउट, एंड नॉर्थ कॉन्गो के पास बड़ी आर्मी है, साउथ कॉन्गो के पास थोड़ी कम आर्मी है. सो साउथ कॉन्गो का जनरल है वो पैसा फेंकता है कि भाई कम एंड वर्क फॉर मी, लाइक कम एंड फाइट फॉर मी. सो मर्सनरी लाइक गिव्स मनी टू से कम एंड फाइट फॉर मी. ओके, नाउ इमेजिन द सिचुएशन कि नॉर्थ कॉन्गो की आर्मी आ रही है, ओके, साउथ कॉन्गो का सोल्जर वही बंदा जिसने पैसे के लिए किया है, राइट, और वो देखता है कि भाई अगर मैं यहाँ रहूँ तो हो सकता है जान जा सकती है, कर रहा है सिर्फ पैसे के लिए है, राइट. नाउ इफ आई वाज टू आस्क यू, इस सिचुएशन में ऐसा बंदा लड़ेगा कि भागेगा? मतलब मोस्ट लाइकली भागेगा, 100% भागेगा, राइट. पैसे के लिए कर रहा था, भाई जान बचाऊं, पैसे के लिए कर रहा था. नाउ
Okay, imagine another situation. India Pakistan की लड़ाई हो जाए. Okay, and I will always say this. I hope not, but sorry, हो ही गई बीच में. But India Pakistan has a fight. Okay, thankfully it wasn't a land war. But assume करें कि in that situation, okay, again same soldier, Indian soldier, border पे खड़ा है, आगे से देखता है कि पाकिस्तान आर्मी आ रही है. ठीक है, उसको पता है कि 99% जान जाएगी. बट उसको ये भी पता है कि अगर मैंने 5-7 मिनट यहाँ इनको होल्ड कर लिया तो हो सकता है रीइंफोर्समेंट्स आ जाए और बैटल का अपना रुख जो है वो ही बदल जाए. एग्जैक्टली. ये बंदा ओके लड़ेगा कि भागेगा? ऑफ कोर्स लड़ेगा. ऑफ कोर्स लड़ेगा. इंडियन आर्मी है. राइट, ऑफ कोर्स लड़ेगा. राइट. सो द पॉइंट इज अगेन इट बॉइल्स डाउन टू कन्विक्शन. सो इवन एज अ सेल्स पर्सन, इवन एज अ बिजनेसमैन, इवन एज एन एंटरप्रेन्योर, इवन एज इवन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कन्विंस्ड आर यू अबाउट what you are actually selling, what you're representing and what you're doing for the market. कुछ लोग आएंगे और करेंगे सिर्फ पैसा के लिए. कुछ लोग आएंगे कि यार भाई चुप के चले जाओ. बट कुछ लोग हैं जो इतनी कन्विक्शन है उनके अंदर. सो लाइक द इंडियन सोल्जर, ओके, देयर गोना गो अहेड and fight irrespective of whatever happens. So that's very important. Conviction is very important. So we had follow up, we had a team building, then being omnipresent, having basically prospects. Prospecting, yep. And your relationships. Last is your relationship and conviction, which we also was an offset Indeed. of that. Yeah. So how important is perseverance when it comes to, because I have heard that a lot of big people saying that it is very important to show up every day. If you are not showing, so which means that there is something which is lacking. Yeah. Perseverance is top. Like it's up there as one of the most important elements. Also because there will be times where your motivation will kind of crash, and sometimes people come and say, "Bhai, motivational speaker है." I say, "भाई motivational speaker मत बोलो, because motivation ऐसी चीज़ है, ठीक है, आप रात को motivated हो, ठीक है, सुबह तक हवा निकल जाती है. आप ऑफिस जाते हो सुबह से, आज तो मैं मतलब 10x करूँगा, और क्लाइंट की 2-4 गालियाँ पड़ी और आपकी मोटिवेशन जो है वो क्रैश कर जाती है. तो मोटिवेशन आई ऑलवेज से आपकी पिक्चर का गब्बर सिंह है. Right? Motivation is in waves, and no matter who you are, sometimes you're highly motivated and sometimes your motivation will crash. तो अगर आप सोचते हो कि मोटिवेशन के बेसिस पे मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, it's not going to happen. It has to be more, right? And again, the perseverance piece will again come back to your conviction. It'll come back to your purpose. That why am I doing this? Exactly. So that becomes very like sometimes people say money is my motivation. I'm like, and yeah, and what's going to happen? Your motivation is going to go up and down, and when it's down, you're going to say, छोड़ यार, ये तो नहीं हो सकता मेरे से. So hence, I would say motivation is the villain of your piece. Perseverance, on the other hand, is the hero. So perseverance will be very, very important, and you have to carry on. Right? There'll be times where you're finished and you'll be like, yaar ab to nahi ho sakta. But you still got to crawl. You still got to keep moving forward. I think that aspect is very important. So perseverance is a big one. A lot of businesses fail, and then we have discussed though, but now I want to understand that as you have just mentioned कि हाँ ये 5-6 points है जिनकी वजह से आप succeed कर सकते हैं. What are the reasons, like maybe 2-3-4 points जो हर किसी को ध्यान देने ही चाहिए so that So I was telling you about scaling with GB, which is the course I used to run in Right. the pandemic, and of course it became a game changer for many. And we ran it for during the pandemic. Again, everyone had a lot of time, so you're on that. And when we started it, उसके 8 module थे, and I think each of those modules was just so good that everyone says, "भाई वापस ले आ." I said, "नहीं, वो तो नहीं हो सकता," because there's like I said, a lot of commitment towards that. But our first module in that, it was why, like the start with why and the goals. So that was the first thing. If you don't have goals as an entrepreneur, as any person, if you don't have goals, then it's like the game of soccer, right? You're running up and down the field and you got nowhere to score the ball. Like अगर गोल ही नहीं है तो बस आप भागते रहोगे, बस कुछ होगा नहीं आपका. So goals is very, very important, and goals also in multiple areas, like we spoke about the 6 areas. The second aspect is obviously the selling skills, right? Because once you've got your product in place, you have to have the selling skills. Third is the team aspect we spoke about. Fourth is financial management. Like once you start, आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, so how do you then go ahead and roll that money over? On the side of investments, but B also in terms of growing your company, that becomes very important. जब आपके पास टीम है तो आप टीम को लीड कैसे कर रहे हैं? So that used to be one of the modules. उसके अंदर एक था कि आप अपना ब्रांड कैसे बनाओगे? Because Grant Cardone ने ये भी बताया that I was great, I was very, very good at what I did, but people didn't know me. Okay, so he was a great salesperson, but his marketing was very bad. So सेल्स एंड मार्केटिंग, लोग बोलते सेल का बंदा बोलेगा भाई सेल्स इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग का बंदा बोलेगा मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है. बस एक सिक्का है, कॉइन है, उसके अंदर हेड्स है और टेल्स है, कौन सा इंपॉर्टेंट है? बोथ, right? Exactly. You can't, a coin will not exist without heads and tails. Exactly. Organization will not exist without sales and marketing, right? So they're two sides of the same coin. You need them both to work together. So hence we did a module on that piece, and then obviously in terms of
on the employee aspects and all that. So these were the modules that were there, and all of these, you know, play a very important part, including in terms, you know, systems for collection, systems for operation. So like many you know, moving parts are there as well. But the good part also is that you don't have to only, you know, bring on a co-founder if you're weak in something. You can, you know, bring on a staff member, you can bring on a consultant. So, you know, hence they can also help, you know, you and your teams get stronger in those areas as well. How important according to you is, you know, your personal relationship and your health? Because अगर ये दोनों के दोनों, you know, if they are not, like, if they are going for a toss, then आप जितने भी successful हो जाएं, कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक void feel होगा. 100%, you know, and that's the truth, you know, and I always believe if money is lost, nothing is lost, right? But if your health is lost, everything is lost. And there are people, you know, who made, you know, crazy amounts of, you know, of wealth and money, but their health is pathetic. They're always, you know, in hospitals, they're always needing, you know, care. Because अगर आपकी health ही ठीक नहीं है, then there's no way you can be, you know, going out there and doing the things that you need to do. I mean, there are times that I go and train, and I start at 9 o'clock in the morning, and रात के 9 बजे तक भी चल ही रही है session, standing, and लोग बोल रहे हैं आप थकते नहीं हो. So I'm like, it's because, you know, I'm so, you know, convinced about what I'm delivering. And, you know, I love the response of the audience, so I don't get tired. But again, that's also because I am kind of taking care of my health. I'm doing a little bit of exercise. I'm keeping diet control, etc., etc. अगर वो सब नहीं थी and the health had deteriorated, then I'll never be able to deliver, right? And that's the truth. I mean, look at our Prime Minister today, right? He is amazing when it comes to, you know, his work ethic and all that, but he's really taking care of his health. He's taking care of his eating, you know, अपना yoga के अंदर, अपना exercise के अंदर, अपना meditation के अंदर. And I've seen, you know, top business owners, you know, top politicians, top, you know, people in their domain, they will take care of their health. There's no doubt about it. अच्छा, अगर मैं जैसे आज की डेट के अंदर आप 2025 में हैं, there is a 25 years of a guy who wants to start his entrepreneurial journey. Yeah. करना है, कुछ करना है, Yeah. entrepreneur बनना है, business शुरू करना है, कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मैंने पढ़ाई कर ली है. ठीक है. Now what he should do, how to basically figure out, and उसके बाद में कोई ऐसे फाइनल आइडिया नहीं, बिकॉज यू नो मे बी ही हैज नॉट डन अ गैप एनालिसिस और समथिंग, और उसको एक आइडिया फाइनलाइज करना है और उस आइडिया के ऊपर फिर काम करके आगे बढ़ना है. कैसे वो डिसाइड करे? You know, again, I'll come from personal experience where there have been people, you know, who've come to me, you know, a lot of children come to me and they're like, this is my idea and this is what I want to do. I'm not sure. Again, I would say if you have the backing, which means, you know, either your parent, uncle, auntie, whoever is there, brother, sister, someone is there to, you know, support you, to say, run with it. Because obviously, you know, there is going to be some degree of, you know, capital required. There's going to be some degree of, you know, push required. There's going to be times when your you know, attitude will like kind of crash. So that support will be required. So I think if that is there, like they're the minimum things that are going to be there. And I would say run with it. What's the worst that's going to happen? You're going to fail, right? And from that, okay, you might learn something and you might, you know, do better the next time around. Or you might, you know, have, you know, something that you can go back to. I don't think at that stage someone will understand the concept of, जैसे आपने बोला, you know, burn the boats and all of that. There might be some people who might get it. I would say great if you actually do get it, but just know that at that stage, if you do fail, it's okay to, you know, have a plan B that you can actually go back on. ये मतलब किताबें बातें हैं that, you know, burn the boats and, you know, all of that, and there's no plan B and all of that. But I would say for someone in this situation, it's okay to have a plan B in place as well. So you say that, you know, plan B is very, very important. I would say that you should have a backup option, because I wouldn't want it to be that a person gets, you know, so depressed by that failure that, you know, they actually end up, you know, doing something to themselves or affecting, you know, those, you know, close to them. I would say that, you know, it's okay, you failed, right? Maybe it's time to do something else and come back again. And that's absolutely okay. We are in the age of AI, and, you know, there is a lot happening in that space. Yeah. Every day is like, you know, a new development happening. So what are your, like, you know, thoughts on that? So my belief is that AI is an amplifier. You know, if you're, you know, really good at, you know, something or you know, relatively good in something, I think what AI does is it takes that and it really amplifies it. There's a lot of confusion about, you know, AI ki success stories, you know, kya banengi. I mean, just, you know, putting in something into ChatGPT and typing out an email, you know, or taking something and making a song on Suno, or creating a video on HeyGen. I mean, these are not game-changing AI applications. Okay, it makes us more efficient. It amplifies, you know, our creativity.
But abhi right now, even the whole world, even globally, okay, and last night, what I think Palantir stock fell 7.5%, today is down 4.5%, because now people are starting to question that AI bubble aa raha hai, right? I mean, just last night, Michael Burry ka position hai, and he's the guy who made the movie The Big Short, also wrote the book, and he's like, mujhe AI case study nahi samajh aa rahi. Right? What happens when a gold rush happens? And this is a gold rush right now. The AI rush is a gold rush. Who makes money in the gold rush? It's the guys selling the shovels. Right? And this is going back to, you know, the American gold rush story in California when there's a gold rush. Who made the money? Not the guy who was digging for the gold, but the guy who was selling the shovel. So in this current AI gold rush, who's making the money? AMD, Intel, Nvidia, right? So all the hardware guys, you know, are pagludar notes छाप रहे हैं. Like Nvidia's market capitalization went above $6 trillion. Right. Okay, which means that okay, now it's bigger than the Indian economy. Right. Logic है. Right, and of course, you know, today we're recording this, and you know, this is you know, early November of 2025. I can also assure and guarantee, based on, you know, my experience and whatever else I know, that a lot of these stocks, Palantirs and Nvidias and all of that, will correct. Again, I'm not a registered SEBI advisor, so don't take a trade. But it will correct 15 to 25%, and some of these stocks will not even exist in few years. Not Nvidia and Palantir, but a lot of these AI guys, you know, who are just popping up and, you know, AI this and AI that, they'll not even exist in 2 to 3 years. This is going to blow up. Big advice for people, right? Be careful, right? So, you know, be careful. I think that's very, very important. I think that I still haven't seen, you know, AI create something really crazy. Like yesterday I was sitting with the founder, amazing guy. He was, you know, from Punjab, then Bangalore, now also spending some time in America. He's created a tool called Humantic. Okay, now when in sales, very, very important to understand a person's personality. Like I'm sitting with you, Pawan, I have to analyze, you know, कि क्या आपकी personality है, you know, आप किस type से मैंने आपसे बात करनी है. Humantic is a tool, okay, which will, based on your digital footprint, आपके LinkedIn को देखेगा, आपका online footprint study करेगा, और मुझे बताएगा कि आपकी personality किस type की personality है, और मैंने आपसे किस type से मैंने बात करनी है. मतलब B2B selling में invaluable tool है. तो मैंने अमरप्रीत को बोला, ऐसे भाई तेरा tool है बिल्कुल top. Right? Because it's a straight away, you know, I use this tool before I'm having a global call with an Adobe or someone else. I see who's the person on the other side. I see their personality, और मेरी talking उसी हिसाब से बदल जाती है. Because उसी base पे अपना bond बनता है और उसी base पे sales होती है. So that's a great case study. Okay, but if someone says, okay, सुनो में गाना बजाओ, गाना बनाओ, उसको अपना जाके, you know, किसी जगह अपना play करो. I mean, is that really going to change stuff? I don't know, right? So there is a lot of gray area in terms of, you know, what's going to happen in AI. I think a lot of, you know, people themselves haven't figured out AI. I mean, I'm big on AI. I have one of my coaches right now is a guy called Jeremy Utley. Jeremy Utley is a professor for AI in Stanford University. I'm in his cohort. Because मैंने आपको बताया, I have to learn from the best in the world. Stanford University, मतलब in the heart of, you know, California, in San Jose. Jeremy Utley, one of the best professors. I'm in his cohort. Okay, I'm learning from him. But उनको भी समझ नहीं आ रहा कि अभी तक AI का होगा क्या. Like, what is the real, you know, game changer? Sure, it's going to help in education. It's going to help in. I was flying back from Chennai the other day, and there was this lawyer sitting next to me, and he said AI is helping us. That, you know, जो हम, you know, cases हमको पढ़ने होते थे और उसके लिए मतलब 1 हफ्ता लगता था, अब वो 12 मिनट में हो जाता है. राइट, PDF अपलोड की, नोटबुक LLM में, यू नो, यूट्यूब की वीडियो अपलोड की, सारा निकल के आ जाता है. मतलब इस पॉडकास्ट को मतलब नोटबुक LLM पर मत डालना, लेकिन अगर आप नोटबुक LLM पे डालोगे और नोटबुक LLM पे डालोगे, पूरी समरी निकल आएगी, उसके, यू नो, फ्लो चार्ट्स बन जाएंगे. ऑल ऑफ दीज आर ग्रेट. लाइक, इट मेक्स मी मोर एफिशिएंट, बट हैज इट चेंज्ड माय वर्ल्ड? Possibly not. So I just think that the real AI case studies, it's bringing efficiencies, but is it changing the world? Not as yet, and that's what bothers me. 25 साल पहले लगभग, आई थिंक, जब .com बूम आया था और ज़्यादा बस्ट हुआ था, आई वुड से, सो तब तक बहुत बड़ी .com कंपनीज बन चुकी थी. Right. अगर मैं AI की बात करूं तो ChatGPT, like, you know, is maybe, you know, the first mover or first company, so to say, across world, जिसको लोग AI के पर्सपेक्टिव से जानते हैं कि हाँ, अच्छा, नहीं, ChatGPT is into AI space. अगर मैं .com को जितना टाइम .com ने लिया, like, you know, to succeed and then fail, and then of course it has its own journey, आपको लगता है कि AI के अंदर ये जो, you know, going at the top and then coming crashing down, ये कितना होने वाला है? So let's say .com boom first. Let's take it into account. I was just starting out that time, so we had some clients at that time. I think 97, 98 it started to gain momentum. 99 तक तो पागलपन हो गया था. Of course, you know, the crash started to come in around 2000. By 2001 it was a wipeout. मतलब, you know, markets had corrected 80%.
In the AI space, when has it really gone crazy? I think when ChatGPT 3.5 came. Okay, so OpenAI, since you said, ChatGPT's parent company is OpenAI. Right. So when ChatGPT 3.5 came, okay, which is now roughly around 2 years ago, that's where it, like, people, AI has been there for a long time. AI has been there for like 30, 35 years. People didn't know, yes. right? But when it became common knowledge, when ChatGPT 3.5 Right. came, right? Of course, then 4 came, 5 came, now I think 6/7 is going to be coming. So now what's happened is that it's become a household name. Okay, and like I said, right now what has happened is that everyone is jumping in. Okay, and matlab aap एक न्यूज़ डाल दो, like I own one particular stock, and this was last week when they said that PayPal, okay, is going to do something with OpenAI. Okay, it opened at $69, the price, and within 15 minutes it hit 77, 78, 79, 81. I said, bhai nikalo, right? And before the day closed, it was back to 69. So the thing is, इतना पागलपन है, आप किसी भी चीज़ में AI जोड़ दो और आपका मतलब भागेगा वो पागलों की तरह. So exactly what was happening, the .com thing is happening, again, where anything AI, okay, is just raising the valuation. And the funny part is that a lot of people are saying that, okay, tie up with me, and it's almost like a circular, economy that's happening in the large, AI space, where Nvidia is like, okay, I'm going to give the chip. OpenAI is saying, I'm going to give you the ecosystem. Right. And then that guy has to come back and again invest in Nvidia, who's going to then invest in OpenAI. It's like topi ghum rahi hai abhi. So somewhere the musical chairs is going to stop and a bomb phatega. I'm not saying it's the end of AI. Even, I mean, today when .coms went down, why do you still have Make My Trip? Why do you still have Exactly. InfoEdge? You will have winners. But will everyone be a winner? Absolutely not. Right? And I think that's something we have to be careful of. When is the AI bubble going to burst? I mean, I don't know, right? I mean, looks ka pata nahi, but you should just be careful and you should, hedge, if you trade those stocks, so you should hedge in case you think मुझे तो company खोलनी है जो सिर्फ AI करेगी. बॉस कल अगर AI bubble फट गया, right? और आप सिर्फ AI कर रहे थे, तो conventional धंधे का क्या होगा? You have to just be careful. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि 27-28 तक लॉट ऑफ जॉब्स विल बी वाइप्ड आउट क्योंकि एआई का बूम है. और तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि लेट्स एनकैश दिस इन अ बिग पॉसिबल मैनर. मैं समझना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये 27-28 जो थ्रेशोल्ड दिया गया है बाय द एक्सपर्ट्स फॉर दिस जॉब मार्केट, ये सेम थ्रेशोल्ड फॉर द बिजनेसेस भी होगा? So interestingly, what is happening, and I've heard, seen some of these guys, and I've heard guys like Mo Goddard, he used to work for Google. He's been a big guy saying all of these things Right. that by 2035 तो कोई jobs नहीं बचेंगी. Right, 2045 तक तो Terminator scenario, Terminator मतलब robots मतलब मार रहे होंगे हमको, हम तो बचेंगे ही नहीं. So a lot of these scenarios are there. Interesting things are happening, and I have again a friend in New York who's in the media space, and his division in his company 20 लोग थे, राइट, जो वीडियो बनाते थे, एडिटिंग करते थे, ये सब करते थे. तो उन्होंने क्या किया कि 19 को फायर कर दिया, बिकॉज ये सब तो AI करेगा सब कुछ. एंड देन व्हेन दे सॉ द क्वालिटी दैट वाज बीइंग डन बाय एडिटिंग, सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स एंड ऑल ऑफ दैट, लगे 4 बंदे तो वापस ले आओ. So what happened is they went from 20 to 1 and now they went to 5. But they figured that 5 is going to bring in ample efficiencies and all of that. So again, it's like a fluid situation. Yes, there will definitely be a lot of entry level job losses, where people are just doing like data entry, for example. That's going to obviously become a problem. Legal के हमने बात की पहले, like the lawyer needed 14 interns who are just studying all the files. Today you just upload the case file and जो भी वो intern कर रहा है, it's going to come out in minutes. So there will be disruption over there, but there will also be creation of of newer things that are actually going to happen, like newer opportunities are really going to pop up as well. Definitely there is going to be issues. Consulting के अंदर again, like big firms would have people who are doing just research work. Today the research work can be done by Notebook LM, or can be done by Claude, Right. Or by Perplexity. So what is going to happen is definitely some degree of job loss for sure, but I hope that there will be category creation of a newer type as well. In my businesses, I mean, I'm already hearing like in the space of training, like किसी का me and a friend were attending a coach that day, और हमको मतलब नींद आ रही थी ऐसे, भाई मतलब क्या कर रहा है बंदा, right? It was an online course and all that, and they कैसे यार ये तो मैं ChatGPT में डाल के वहीं से सीख लेता. So it's happening. So even in training there'll be disruption, right? Which is why I say I'm someone who likes to go out there in person and deliver something, because that robot encapsulated in whatever exoskeleton skin that will be there to deliver a training to an audience, मतलब maybe वो 10-15 साल अभी लगेंगे, but there's going to be job losses. I mean, you'll be a fool to say नहीं यार I am so good that मेरी job तो नहीं जा सकती ऐसा. बट न्यू रेवोल्यूशन आएगा और आप बोल रहे हो कि कैटेगरी भी नई बनेंगी, For sure. बिजनेसेस भी डेवलप होंगे अराउंड AI, राइट? Oh, 100%, 100%, right?
and it's already happening, and more will happen. All I'm saying is Exactly. that there's no concrete, used study around AI saying that AI has, disrupted, this entire space. I'm sure it'll happen in medical. I'm sure it'll happen in legal. I'm sure it'll happen in education. Like these are, places, I 100% see it happening. It is already happening in the world of, PR and marketing and all of that. In sales, like today, people are saying that, we can now have a virtual agent, okay, who will make 1,000 calls a day. बॉस वर्चुअल एजेंट आपको फोन करेगा, आप उसके मतलब हायलो के बाद मतलब फिर relationship आप काट ही दोगे, we discuss ना? Yeah, because and they're like, oh, but I will train the bot, to be so good and all of that. Try karo. We're not there on that front, So those things are still some time away. Last message, Gaurav. So last message, to your audience would be this, that, stay the path. If you have a belief, if you have a conviction, be like that Indian soldier on the border saying that, I am going to do this irrespective, whatever happens. But that said, also, be a realist in the sense that, if the writing is really on the wall, that there is no hope, no chance, and everything is gone, be open to conversation, take advice. Don't at that time, go down with the boat. Be willing to, jump onto the boat that's still afloat. So that would be my piece of advice. And be working towards omnipresence. So in the sense that, people will notice you, people will see you, people will want to join your movement. I think these things are very, very important. So don't hide yourself. You should be present everywhere, right? As much as possible. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Gaurav. Thank you. It was a pleasure.